क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। ગુડ આફ્ટરનૂન સ્વાગત આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં. હું યશ આપની સાથે. ભારતીય માર્કેટ્સે આજે ઘટાડાનો મૂળ બતાવ્યો છે, ત્યારે આવો સીધા જ હું તમને લઈ જઈશ મારા ઇન્ટરેક્ટિવ વોલ પર. સમજીએ ભારતીય માર્કેટ્સે આજે કર્યું શું છે. તમને યાદ હશે દિવસની શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી હતી તે કે ભારતીય માર્કેટ્સ હજુ પણ એટલા કંઈ ખાસ તેજીમાં આવ્યા નથી. તેજીમાં હજુ પણ થોડો સમય લાગી શકે તેમ છે અને લગભગ એ જ રીતે થયું છે. જુઓ, મેં તમને એક્ઝેક્ટલી કહ્યું હતું ઉપરના સ્તરે કયા લેવલ્સ પર તમે અટકી શકો છો અને ત્યાં જ અટક્યા. આવો નિફ્ટીના ડેઇલી ચાર્ટ્સ હું તમને બતાવી દઉં. ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર તમને જોવા મળે છે ઇન્ટ્રાડે હાઈઝ જે આપણા બન્યા છે તે આપણું જે મેઇન રેઝિસ્ટન્સ હતું. તમે નો ડાઉટ આજે 25,200 પાર કર્યું, પણ ઉપરનું મેઇન રેઝિસ્ટન્સ 252 પર, જે પહેલાં 280 આસપાસ હતું, જે ઘટીને 252 પર આવી ગયું છે. એટલે આ રેઝિસ્ટન્સ હજુ પણ યથાવત છે. આવી સ્થિતિમાં 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજને ઉપર સતત રહેવાની કોશિશ કર્યા બાદ રિજેક્શન આવ્યું છે. 156 થી નીચે તમે અત્યારે ફિલહાલ આવ્યા છો. મેઇન આપણું જે આ લેવલ હતું, જે તમે ખાસ જુઓ છો, તે તો ઇન્ટેક્ટ છે, પણ બ્લુ આપણું જે આ ખાસ લાઈન હતી 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ, તે તમે તોડી દીધું અને તે લેવલ આટલા દિવસથી હું જેની ચર્ચા કરી રહ્યો હતો તે 25,050. હજુ પણ જ્યાં સુધી આને ઉપર ડિસાઇઝિવ 2 દિવસની ક્લોઝિંગ નથી આવતી, ગઈકાલે તો હતી, આજે પણ જો 25,050ની ઉપર તમે સરસ મજબૂતી સાથે ક્લોઝ નથી થતા, મતલબ સાફ છે હજુ પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે. અત્યારે નિફ્ટી એક્ઝેક્ટ 25,050 પર કારોબાર કરી રહ્યો છે. આજના ડેઝ લો તમારા કેટલા છે? 25,008. મતલબ 25,000 તમે તોડ્યું નથી, એટલે 25,000 હજુ પણ ઇન્ટેક્ટ છે. જ્યાં સુધી આ ઇન્ટેક્ટ રહે છે ત્યાં સુધી હજુ થોડો ટેન્શન ઓછો છે, પણ 25,050 આ લેવલને ઉપર ડિસાઇઝિવલી ક્લોઝ આપવું જરૂરી છે. હવે 3 વાગીને ઓલમોસ્ટ 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. આવી સ્થિતિમાં લાગતું નથી કે અહીંયાથી આટલી સરસ તેજી તમને આવતી જોવા મળે હવે, એટલે આવતીકાલે પણ આવો જ અસમંજસનો માહોલ રહેશે. આ પરિસ્થિતિ યથાવત રાખીએ. આવો હવે તમને હું 15 મિનિટના ચાર્ટ પર બતાવી દઉં દિવસની શરૂઆતથી શું થયું. ઉપર 25,212 સુધીના તમે ઇન્ટ્રાડે હાઈ બનાવ્યા. જુઓ ક્યાં બનાવ્યા? આ છે ગેપ અપ ઓપનિંગ થઈ તમારી. આ જે ક્લોઝ હતો તેની સામે અહીંયા ઓપનિંગ થઈ. આ જ લેવલ પર તમારા 25,212ના હાઈ બની ગયા અને ત્યાંથી પછી વેચવાલી આવવાની શરૂઆત થઈ. શાર્પ વેચવાલીમાં તમે આવ્યા દિવસના ન્યૂનતમ સ્તરો પર. અહીંયા તમે એક વખત 25,000ને અટેમ્પ્ટ કર્યું, ફરી ઉપર આવ્યા, તુરંત જ ફરી એકવાર સેલિંગ આવ્યું. અહીંયા ફરી એકવાર કોશિશ કરી, અગેન તમે 25,000ને અહીંયાથી અટેમ્પ્ટ કર્યું, ત્યાંથી ઉપર, અને અત્યારે લગભગ આજે તમે લેવલ જુઓ છો તેને આસપાસ જ કારોબાર 25,050. સો આખા દિવસની મેઇન તમે એવરેજ કાઢો 25,050. બહુ સરસ રીતે નિફ્ટીએ કોશિશ કરી છે કે ડિફેન્ડ કરે, પણ સો ફાર 25,050ને જ આસપાસ કારોબાર છે. અને જ્યાં સુધી આ લેવલ જે છે તે જળવાયેલું છે, પ્રોબ્લેમ ઓછો રહેશે, પણ જેવું આ લેવલ તૂટી ગયું તમારા માટે હજુ પણ 25,700નું રિસ્ક, જે નીચે મેં તમને બ્લુ લાઇન બતાવેલી હતી ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર, તે રિસ્ક હજુ પણ યથાવત રહેશે. હજુ પણ એવા કન્ફર્મેશન આપ્યા નથી. રિલાયન્સે મૂડ ખરાબ કર્યો, TCSએ મૂડ ખરાબ કરેલો છે, HDFC બેંકમાં માંડ એક તેજી હતી, એ પણ આજે થોડો લાલ નિશાનમાં આવી ગયું. એટલા માટે થઈને 25,050 મહત્વના લેવલ પર ફરી એકવાર નિફ્ટી અને તેજીના ચાન્સ હજુ પણ ઓછા છે. તમને એમ થશે કે યુએસ માર્કેટ તેજીમાં છે, એશિયન માર્કેટ તેજીમાં છે, તો ભારતીય માર્કેટને શું નડે છે? હજુ પણ જે ફેક્ટર્સ હતા, જેમ કે ચીનમાં પૈસા જવા, એ રિવર્સ નથી થયું, મોંઘવારી તમારી વધેલી છે, તો પછી માર્કેટને તેજી માટે કોઈ જગ્યા બનતી નથી અને પરિણામો પણ ખરાબ આવી રહ્યા છે. બીજા ત્રિમાસિકના પરિણામો જુઓ તમે, બધા જ ખરાબ આવી રહ્યા છે. એટલે મતલબ સાફ છે, તમારે અહીંયાથી ખાસ ઘટાડા માટેની જ તૈયારીઓ હજુ પણ રાખવી રહેશે, તેવું સ્પષ્ટ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બતાવીએ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ પર 25,000 પર મેઇન સપોર્ટ હતો, તમને યાદ હોય તો આ રહ્યો તમારા માટે 25,000. હવે એ સપોર્ટ જુઓ તમે, એની સામે ચેલેન્જ કેટલી છે? 25,000ના પુટ તમારા અહીંયા છે. 25,100 મોટી ચેલેન્જ થઈ ગઈ, 25,200 તો સૌથી મોટી ચેલેન્જ નથી. ઇનફેક્ટ આજે 25,200માં જે સિગ્નિફિકન્ટ કોલ રાઇટિંગ છે ને, તે બહુ બ્રુટલ છે. આજે ને આજે જ 25,200માં બહુ મોટું રાઇટિંગ એડ થયું છે. હું આગળ OI ચેન્જમાં બતાવીશ. પણ તમને યાદ હોય તો આપણે વાત કરી હતી, આ છે 750, અહીંયા તમારા માટે સપોર્ટ એરિયા. આપણે તમને વાત કરી હતી કે આ 25,050 છે અને ઉપરની તરફ જે છે તે રેઝિસ્ટન્સ આવશે. પહેલાં તો આ
એ એક્ઝેક્ટલી ત્યાંથી આગળથી જ તમને રિવર્સલ જોવા મળ્યું. 200 એ સ્પર્શ્યા અને ત્યાંથી જે શાર્પ વેચવાલી આવી તે જબરદસ્ત હતી. સો અત્યારે ફિલહાલ હવે નથી લાગતું કે આ એક્સપાયરી માટે 25,200 તમે ક્રોસ કરો. ગુરુવાર માટેની વાત કરી રહ્યા છીએ. આવો હવે હું ઓઆઈ ચેન્જ બતાવું. જે આ 25,200ના કોલ છે ને તેને તમે ખાસ નજર કરો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જના હિસાબથી. આ જુઓ તમે 25,200 કોલમાં આજે 60 લાખ ઓઆઈ આવ્યો છે. 60 લાખ લોકોએ આજે પુટ કોલ વેચ્યા છે 25,200ના. માફ કરશો, મતલબ સાફ છે કે અહીંયાથી ક્લિયર કટ લોકોને રસ છે કે 25,200 ને ઉપર નિફ્ટી ના જાય. અગેન તમે 25,100 જુઓ, આજના દિવસે 50 લાખનું એડિશન છે. તો ક્લિયર છે વાત. અહીંયાથી ખાસ પરિસ્થિતિ બનતી જોવા મળી રહી છે. નજર અહીંયાથી ખાસ રેન્જના હિસાબથી તમારે રાખવાની રહેશે. તો નિફ્ટીની આપણે વાત કરી લીધી. આવો એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક બાદ બેંક નિફ્ટી સમજીએ. આપણી સાથે આપણે એક્સપર્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, તેમની પાસેથી સેટઅપ સમજીએ. બ્રેક બાદ બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત. નજર કરીશું હવે બેંક નિફ્ટીના સેટઅપ પર. જેમ આપને વાત કરી, નિફ્ટી તો હજુ પણ કન્ફ્યુઝિંગ સ્ટેટમાં છે. 25,50 ની આસપાસ જ જોવા મળ્યું. પણ બેંક નિફ્ટીમાં શું થઈ રહ્યું છે આવો ડેલી ચાર્ટ હું તમને બતાવું. બેંક નિફ્ટીની સાથે પ્રોબ્લેમ જે છે તે હવે બની રહ્યું છે 52,000નું લેવલ. અને એ 52,000નું લેવલ એટલે તમારા માટે આ જે 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ છે તે. આજે 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ અને આજે 10 દિવસ અને 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજનું કન્જંક્શન જે બને છે તે લેવલ જે છે તે ખાસ અત્યારે ફિલહાલ આજની રેન્જ તમે જુઓ ને તો આજે તમારા લો છે 51,700. તમારા આ જે મૂવિંગ એવરેજીસ છે 51,757 અને 761. એટલે તમારી આ જે મૂવિંગ એવરેજ છે 10 અને 50 દિવસની તે ઇન્ટ્રાડે સપોર્ટ બન્યા અને એ છે 750 આસપાસ. ઉપર રેઝિસ્ટન્સ ક્યાં આવ્યું તમારા માટે? આ જે મૂવિંગ એવરેજ છે તે છે 51,961 અને 52,000 તમારા ઇન્ટ્રાડે હાઈ છે. એટલે 52,000થી 750ની રેન્જમાં બેંક નિફ્ટી રહ્યો. હવે તકલીફ શું પડી રહી છે બેંક નિફ્ટીને? બેંક નિફ્ટીને તેજી કરવી તો છે પણ સાથ હવે સેન્ટિમેન્ટ નથી આપતા. બેઝિકલી પ્રોબ્લેમ શું છે કે બેંક નિફ્ટીની સાથે જે પ્રકારે તેજી તમે આટલા દિવસમાં જોઈ, આ તમે જુઓ છો એક દિવસ તેજી મંદી. એટલે આજનો દિવસ ફરી એકવાર લાલ નિશાની કેન્ડલ બની ગઈ. હવે બેંક નિફ્ટીનું ક્લોઝ ખરાબ નથી. તમે જુઓ 51,884 900 આસપાસનું ક્લોઝિંગ. એટલે અલ્ટિમેટલી સારું કહેવાય. આવતીકાલે એક્સપાયરી છે તમારી, પણ તેમ છતાં પણ તમે જુઓ ને તો અહીંયા થોડું સેન્ટિમેન્ટ કન્ફ્યુઝિંગ જરૂર લાગે. આપણે એક્સપર્ટ પાસે જરૂર સમજીએ. પ્લસ આપણી જે રેન્જ છે, આ જે લાઇન તમે જુઓ છો અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી તે છે 51,500. જ્યાં સુધી મેન્ટેન થાય છે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ અત્યારે ફિલહાલ તેને બહુ નજીક છો. એટલે જો કંઈ પણ એવા ખાસ સેન્ટિમેન્ટ આવ્યા જેમ કે યુદ્ધ થઈ ગયું આ તે કંઈ પણ, તો પછી આ તૂટવાના ચાન્સ પણ છે. એટલે બેંક નિફ્ટી થોડું ફ્રજાઇલ છે હજુ પણ. એ એક પરિસ્થિતિ અહીંયા ખાસ બને છે. આવો 15 મિનિટના ચાર્ટ જોઈ લઈએ. 15 મિનિટના ચાર્ટના હિસાબથી તમને જોવા મળશે અહીંયાથી ખાસ અમેઝિંગ મૂવ આજની જે હતી. તમે જુઓ દિવસની શરૂઆત થઈ, ગેપ અપ ઓપન થયા, તમે 52,000 અહીંયાથી ખાસ તમે હાઈ બનાવી દીધા. ત્યારબાદ શાર્પ સેલિંગ આવ્યું. ખરીદદારી નિફ્ટી કરતાં બેંક નિફ્ટીમાં સરસ આવે છે. જુઓ તમે ફરી એકવાર સેલિંગ, અગેઇન બાઇંગ તમને અહીંયાથી જોવા મળે છે. સેલિંગ બાઇંગ. એટલે બેંક નિફ્ટી જે છે ટ્રેજેક્ટરી તમે જુઓ ને ડેઝ લોથી તો ટ્રેજેક્ટરી પોઝિટિવ છે. પણ થઈ શું રહ્યું છે? જેવા તુરંત ઉપર આવો તુરંત વેચવાલીવાળા ઊભા છે અને જેવા નીચે આવો તુરંત ખરીદદારી પણ થઈ રહી છે. એટલે આ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ સ્ટેટમાં અત્યારે ફિલહાલ બેંક નિફ્ટી. HDFC બેંકનો સાથ પણ નથી, પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યો છે. એટલા માટે બેંક નિફ્ટી હવે થોડું 52,000 ને ઉપર જવા માટે થોડી રાહ જોઈ રહ્યો છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરીએ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના હિસાબથી 52,000 પર કોલ રાઇટર્સ બહુ મોટી સંખ્યામાં ઊભા છે અને તે છે અહીંયાથી ખાસ. એટલે જ આજે જુઓ તમે 52,000 જેમ નિફ્ટીમાં જે સેટઅપ બન્યું હતું, નિફ્ટીનું સેટઅપ બન્યું હતું તે હતું 25,200. બેંક નિફ્ટીનું સેટઅપ 52,000. અહીંયાથી જ સેલિંગ આવ્યું. આજે ઓઆઈ મેજર એડ થયા છે કોલમાં. અહીંયા પણ થોડું એડિશન છે 51,800 51,900 અને આ છે 51,500. સપોર્ટ અત્યારે ફિલહાલ બની રહ્યા છે. રેન્જ ઇન્ટેક્ટ છે પણ લાગી રહ્યું છે આવતીકાલે કદાચ થોડું સેલિંગ પ્રેશર આવે અત્યારની સ્થિતિને જોતા, કેમ કે કોલ રાઇટર્સ અગ્રેસિવ છે. ચેન્જ બતાવો. ઓઆઈ ચેન્જના હિસાબથી તમને અહીંયા બતાવીએ ખાસ પરિસ્થિતિ. કોલ રાઇટર્સ અગ્રેસિવ છે. ઓલમોસ્ટ આવતીકાલે અહીંયા એક્સપાયરી થવા જઈ રહી છે, ત્યારે વીકલી એક્સપાયરી બધી પૂરી થઈ જશે. હવે બેંક નિફ્ટીની પણ પૂરી થવાની છે. તો પુટના થોડા ઓઆઈ ઓછા છે આજે, પણ કોલના ઓઆઈ વધારે છે. પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે. આગળ વધીએ. આપણે હવે ખાસ આપણા એક્સપર્ટ પણ આપણી સાથે જોડાશે. તેમની પાસેથી અહીંયા સમજીશું કે ભારતીય માર્કેટ્સનું સેટઅપ શું બની રહ્યું છે સૌથી પહેલાં તો, અને ત્યારબાદ સ્ટોક સ્પેસિફિક જે છે તેના ઉપર પણ આપણા સૌ કોઈની નજર જે છે તે અહીંયાથી ખાસ રહેવાની છે. તો આપણા એક્સપર્ટ આપણી સાથે જોડાશે, તેમની પાસેથી પણ વાત કરીશું અને સમજીએ કે ભારતીય માર્કેટ્સ અત્યારે ફિલહાલ જે છે તે ખાસ કઈ સ્થિતિમાં તમને જોવા મળી રહ્યા છે. અને ઓવરઓલ તમે જુઓ મિડ કેપ, આજે સ્મોલ કેપમાં બહુ સરસ તેજી જોવા મળી છે. સો એ એક ખાસ મોટી હાઇલાઇટ તમને અહીંયાથી બનતી જોવા મળશે. સ્મોલ કેપને ખાસ તમે ધ્યાન પર રાખો, કેમ કે અહીંયા સરસ જે છે તે તેજી તમને બનતી અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહી છે. મિડ કેપ નર્વસ છે
પણ સામે જુઓ તમે નિફ્ટી નર્વસ, મિડ કેપ નર્વસ, બેંક નિફ્ટી પણ ઉપલા સ્તરોથી નીચે આવ્યું, મામૂલી રેન્જમાં રહેવું, પણ સ્મોલ કેપમાં અમેઝિંગ મૂવ તમને આજના દિવસે આવતી જોવા મળેલી છે, તો આને પણ તમારે ખાસ ધ્યાન પર રાખવાનું રહેશે. તો આવો એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે, બ્રેક લઈ લઈએ. બ્રેકને પહેલે બાજુ જઈએ અને સ્ટોક સ્પેસિફિક જે છે તે આપણને ખાસ તમને સમજાવીશું કે કયા પ્રકારના પેટર્ન્સ આજના દિવસે બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. બ્રેક બાદ બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત. આગળ હવે ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે લક્ષ્મીશ્રી इन्वेस्टमेंटના अंशुल जैन जुड़ा रहा है. अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सर. सेटअप पहले तो डिस्कस कर लेते हैं. 25,050 सर, हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दे रहा है निफ्टी. वहाँ पर रेजिस्टेंस और ऊपर की तरफ आप देखें 20 दिन की मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा अटक रहा है. बैंक निफ्टी भी आप देखें तो वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन हो रहा है सर. थोड़ा सा रेंज में फंस गए हैं आज. नहीं तो कल की मूव के बाद आज थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का ज़्यादा था, लेकिन महंगाई के आंकड़ों ने शायद मूड खराब कर दिया. अंशुल. नमस्कार यशी, आपके सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं. देखिए, डेली चार्ट पर अगर देखें तो निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रही है, लेकिन पिछले 5 दिन की अगर रेंज पकड़े तो ऊपर में 25,240 और नीचे में 24,920 ये रेंज बनती हुई दिख रही है. तो 24,920 जब तक प्रोटेक्टेड है, मान के चल रहे हैं कि बाउंस बैक थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और एक्सटेंड होने के लिए 25,240 का लेवल क्रॉस होना जरूरी है. और वहीं बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में हम 55 डे मूविंग एवरेज को पूरे दिन एब्जॉर्ब किए हैं. आज के सेशन में पूरा सेशन हम 55 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्पेंड किए हैं. उस पे 2 बार रिजेक्शन आया, 2 बार नीचे आने की कोशिश की, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस हम वहीं खड़े हैं. तो प्रोबेबली कल के सेशन में अगर हमको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है 52,000 के ऊपर या 51,950 के ऊपर, इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, हम स्लाइस थ्रू भी करते हैं उसको, तो फिर 52,200 और 52,600 ये टारगेट आते हुए दिखेंगे. तो हम अभी यहाँ पे निफ्टी पे काफी बुलिश हैं और बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है. तो आउट ऑफ द 2 अगर एक लेंगे तो बैंक निफ्टी लेंगे, लेकिन दोनों में लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है. क्लियरली तो लॉन्ग ट्रेड लिया जरूर जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा फंस रहा था रेंज में, जिसके ऊपर आपने सर बोल दिया तो अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है. लेकिन साथ ही साथ सर पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस जान लेते हैं. आज कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में सर? देखिए, अभी वो फेज चल रहा है जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अल्फा नहीं जनरेट कर रहे हैं स्टॉक्स तो फिर उनके पिटने की संभावना काफी हाई हो जाती है. तो लार्ज कैप में ही रहेंगे. पहला रहेगा टाटा पावर. इसमें एक 75 मिनट चार्ट पे बुलिश फ्लैग बना है, और ये फ्लैग वीकली चार्ट पे रीटेस्ट कंप्लीट होने के बाद बना है, तो प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में अप मूव बनती हुई दिखेगी. 463 के आसपास बाई करना है, 450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए. ऊपर में 495 पहला टारगेट रहेगा, और ओवरऑल 545 ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं. दूसरा स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम का रहेगा. मेटल्स में हमको अच्छी तेजी लग रही है. आज थोड़ा सा नेशनल एल्यूमिनियम में करेक्शन आया है, ऑन द डिप्स इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं. समवेयर अराउंड 218 के आसपास अच्छी बाइंग बनेगी इस काउंटर में. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 208 रुपए का, 10 रुपए की रिस्क रहेगी, और ऊपर में ये स्टॉक आपको 255, 254, 255 के टारगेट दे सकता है. तो ये 2 स्टॉक बाई करके चल सकते हैं. और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये दोनों हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं, लगभग इसी भाव को रिकमेंड किए हैं, तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में लॉन्ग हो सकते हैं. डेफिनेटली. तो વ્યૂ નાલ્કો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પહેલાં તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખો, અને ટાટા પાવર બંનેમાં લોંગ જવા માટેની સલાહ તમને અહીંયાથી ખાસ બની રહી છે, નજર રહેશે. સર सबसे पहले तो रिलायंस के साथ ही बातचीत शुरू करना चाहूँगा. अब मैं जानता हूँ कि आपके खास डिस्क्लोजर्स रहेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रॉड बेस रिजल्ट के बाद सेंटिमेंट खराब हुए हैं. जो कुछ भी कमेंट्री आपकी ओर से पॉसिबल हो सके. देखिए, रिलायंस में मेरे को बहुत ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है कि 2 क्वार्टर, ये 3rd क्वार्टर है जहाँ पे म्यूटेड रिजल्ट आए हैं. जनरली रिलायंस में आप देखिए 2-3 क्वार्टर म्यूटेड रिजल्ट आते हैं, उसके बाद 2-3 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आते हैं. तो 1 क्वार्टर और शायद जाते जाते ये म्यूटेड रिजल्ट देगा, उसके बाद ठीक हो जाना चाहिए. ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे देखें मंथली चार्ट पे तो 2590 का ब्रेकआउट था. आई गेस एक बार उसको रीटेस्ट करने जा सकता है. वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक पे एक्यूमुलेट करने की. ऊपर से बोनस की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, प्रोबेबली बोनस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी नेक्स्ट वीक में. तो रिलायंस में ट्रैक्शन बनता हुआ दिखना चाहिए. मार्केट के करेक्शन में कहीं भी 2590 मिल जाता है
तो बेहतरीन एक सपोर्ट जोन है, वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिहाज से पड़ा हुआ है, तो हम हर डिप पे उसको एवरेज करते हुए चलते हैं। ડેફિનેટલી તો વ્યૂ રિલાયન્સ માટે આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ આ પરિણામ બાદ થોડું ટેન્શન જરૂર છે પણ કંઈ બહુ ટેન્શન વધારે છે નહીં। નેક્સ્ટ સર પહેલે તો એક સેક્ટોરિयल इंडेक्स देखिए आप, निफ्टी रियल्टी रियल एस्टेट स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं आज 2-2.25%। आज स्मॉल कैप भी बहुत बड़े आज चला है और स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ रियल एस्टेट स्टॉक्स ने भी मुनाफा कमाया। एक स्टॉक हमारे नज़र में आया था, वो है सनटेक रियल्टी, बहुत ही बढ़िया आज 8% की अप मूव है। आप देखिए बिजनेस अपडेट उनकी आई है और बढ़िया बिजनेस अपडेट आई है, उसके चक्कर में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। प्लस इंडेक्स की भी हम बात करते हैं सर, और इस सेक्टर में अगर सनटेक ना सही और कोई स्टॉक आपको पसंद हो तो उसके बारे में भी हम बात करें। देखिए सनटेक रियलिटी में अगर डेली चार्ट पे देखें तो पिछला पूरा क्वार्टर डाउनवर्ड बाइस के साथ स्पेंड हुआ था, वीवैप के थ्रू क्लियरली दिख रहा है, और उसका एवरेज था वीवैप वैल्यू थी 590-592 की जोन में। अब इस क्वार्टर में स्टार्टिंग में ही हम 590-592 की जोन हिट कर रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक 490 के ऊपर 590 के ऊपर सस्टेन करता है, हाई लाइकली है कि आपको 700-720 तक की अपसाइड मिलेगी। रियलिटी एज एन इंडेक्स हमको काफी अच्छा लग रहा है, 1200 तक के अपसाइड टारगेट है, 1080 चल रहा है इंडेक्स अभी। तो इंडेक्स में अगर 10-12% की मूव आती है तो ये मिड कैप स्टॉक है और अल्फा जनरेट कर रहा है, तो हाई लाइकली है कि स्टॉक में 700 रुपए तक की अप मूव मिले। इसके अलावा जो काउंटर हमको इस सिमिलर स्पेस से अच्छा लग रहा है वो है ओबराय रियलिटी। अगर देखेंगे तो एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है, फ्लैट बेस बनना स्टार्ट हुआ था, वहां से 85 डेज बना है और कल के सेशन में ब्रेकआउट आया, आज फॉलो थ्रू मूव है। हालांकि धना भाई ब्रेकआउट है तो इमीडिएटली बाई नहीं करना है, ऑन द डिप्स 1967 तक मिल जाता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में 2300-2350 रुपए स्टॉक आता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम रेगुलरली शायद बातचीत करते हैं लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, HDFC बैंक। सर येफ्रीज की ओर से बाय रेटिंग दी गई है, 1890 का टारगेट दिया गया है। लोन टू डिपॉजिट रेशियो मतलब कि जो LDR की प्रॉब्लम है 3 साल में 85-90% करने का जो हेतु है वो आप देखें तो येफ्रीज को लग रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ब्रांचेस ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, उनकी वजह से भी डिपॉजिट बढ़ जाएगी, ऐसा उनका कहना है। सर 1700 पे अटक रहा है आज, और बैंक निफ्टी की जो मूव है मोटा मोटी आप देखें तो HDFC बैंक के ही ऊपर डिपेंडेंट रही है सो फार, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा और टेक्निकली समझना चाहिए। देखिए HDFC बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम HDFC बैंक रहा है, और HDFC बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि मर्ज्ड एंटिटी का मार्केट कैप इतना बड़ा है कि स्टॉक को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि अगर मंथली या वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे 65 हफ्ते हो चुके हैं एक VCP पैटर्न बिल्ड करते हुए। लास्ट वीक हैमर था, करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव ले रहा है। 1760-1780 एक बड़ी रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसको निकाल लेता है तो स्टॉक में 2050 तक की तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी, और अगर ये 2050 जाता है तो बहुत आराम से आप पकड़ लीजिए कि बैंक निफ्टी आपको 10,500 के ऊपर दिख जाएगी। तो HDFC बैंक पे बुलिश है, उसी लिहाज से उसी की वजह से हम बैंक निफ्टी पे भी काफी बुलिश हैं। तो HDFC बैंक हमको अच्छा लग रहा है, प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स यहाँ से ले सकते हैं। इन्वेस्टर काइंड ऑफ कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो यहाँ ले सकते हैं। जो ट्रेडर्स हैं जिनको मोमेंटम चाहिए होता है उनको 1760-1780 निकलने का वेट करना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग लेते हैं तो आपको बढ़िया 1840 तक फटाफट मोमेंटम मिल जाएगा। डेफिनेटली सो HDFC बैंक अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं, व्यू आ प्रमाणे सर तरफથી જોવા મળી રહ્યું છે। रामकृष्ण फोर्जिंग सर आज खबरें आई हैं इस स्टॉक पे, नया रिकॉर्ड हाई सबसे पहले तो बन गया। UBS की ओर से बाय रेटिंग दी गई है, 46% के ऊपर के टारगेट्स हैं, कैपेसिटी एडिशन है, क्लाइंट एडिशंस हैं, ये सब बढ़िया जा रहे हैं, ऑर्डर्स में एडिशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। रामकृष्ण फोर्जिंग सर देखिए रामकृष्ण आरके फोर्जिंग में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैट बेस बना हुआ है, और इस स्टॉक में एक ही प्रॉब्लम है, काफी अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। फ्लैट बेस अगर देखूं तो आज गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है, 68 दिन का फ्लैट बेस था, बट इस स्टॉक के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये 6th बेस का ब्रेकआउट है। जनरली 4th बेस पे ही हम अवॉइड कर देते हैं अनलेस स्टॉक बहुत अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा हो। ये 6th बेस का ब्रेकआउट है, जनरली 6th बेस के ब्रेकआउट फेल होते हैं। आपको देखना है कि 6th बेस के ब्रेकआउट फेल होते हैं और किस तरीके से लॉन्ग ट्रैप करते हैं। तो अब PFC REC देख लीजिए, ऑफ लेट जो लास्ट ब्रेकआउट आया था जहां से ऑल टाइम हाई बने थे,
और ये देखिए 9 दिन की कंटिन्यूअस लॉन्ग लिक्विडेशन आई थी और स्टॉप लॉसेस जिन्होंने नहीं काटे बहुत जल्दी से अंडर वाटर चले गए। तो ये सिमिलर सिचुएशन स्टॉक में होने की गुंजाइश है। तो इस रिस्क को अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, 1000 रुपए या 980 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। ऊपर में अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो 1290 1300 तक जा सकता है। बट ये वो बेस या ये वो क्वालिटी ऑफ ब्रेकआउट नहीं है जो मैं प्ले करूंगा या अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा। तो मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर केवल टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ब्रेकआउट है और 1290 तक जा सकता है। ડેફિનેટલી તો વ્યૂ इसके ऊपर बना रहेगा 1290 આગળ જતા 1290 રામકૃષ્ણ ફોર્જિંગ્સ તમે ધ્યાન પર રાખી શકો છો। नेक्स्ट स्टॉक BEML इंटीग्रल कोच फैसिलिटी की ओर से 867 करोड़ का ऑर्डर कुछ मिला है। हाई स्पीड ट्रेन सेट्स बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया ऑर्डर है और समाचारों के बेसिस पर यह स्टॉक तेज़ी दिखाता रहता है। सर BEML को कैसे देखेंगे आप? देखिए इन स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है और फर्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आ चुकी है। आपको याद होगा यशी इन सारे स्टॉक्स को PSU में पावर हो गया, रेलवे हो गया, ये शिप बिल्डिंग काउंटर्स हो गए, इनमें मैं सब में बजट के दिन से सेलिंग कहते आ रहा हूँ कि आप निकल जाइए। 50% करेक्शन आता हुआ दिख सकता है स्टॉक में। हाई से 37% ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है वीकली चार्ट पे। 37% वन साइडेड डाउन मूव है, तो थोड़ा सा अपवर्ड जिसको हम कहते हैं पुल बैक वो आ सकती है। समवेयर अराउंड आप मान के चलिए कि 4000 तक पुल बैक कर सकता है। बट ये पुल बैक अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक से निकलने की, क्योंकि इवेंचुअली ये स्टॉक नए लोज बनाते हुए दिखेंगे। जो इमीडिएट स्विंग लो बने हैं इनको तोड़ के नए लो बनाते हुए दिखेंगे, जो कि BEML पे बनता है 2660 रुपए का। तो रैली पे अगर 4000 के आसपास मिल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। 2660 रुपए आता हुआ दिख रहा है इसका। ઓકે, સો 2660 સુધી આગળ જતા જોવા મળી શકે છે। સ્ટોક ધ્યાન પર રાખવાનો રહેશે BEML। એક ક્વિક બ્રેકનો સમય, બ્રેક બાદ આપણે ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ તરફ આગળ વધીએ। તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। ભારતીય માર્કેટ્સ ક્લોઝ તરફ આગળ વધી ચૂક્યા છે અને અત્યારે ફિલહાલ જે પ્રકારની સ્થિતિ છે એક નર્વસનેસ નિફ્ટીમાં ડેફિનેટલી જોવા મળી રહી છે આપણને। ન્યૂનતમ સ્તરો પર જે પ્રકારે અટકવાની કોશિશ કરી હતી તમે સમજો તો ત્યાંથી ખાસ હવે જોઈએ આજનું ક્લોઝ તો તમને 25050ની નજીક જ થોડું ત્યાંથી ઉપર જોવા મળી રહ્યું છે। સેટલ થઈ જવા દઈએ। બેંક નિફ્ટી ડેફિનેટલી થોડું હજુ પણ મજબૂતી બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે, પણ સ્મોલ કેપે આજે બહુ જબરદસ્ત એક્શન બતાવ્યું। थोड़ा सा अंशुल रैपअप करते हैं। अब स्मॉल कैप ने जो आज अमेजिंग मूव दिखाई है वो आप थोड़ा सा समझाइए सर, और बाकी आज की क्लोज को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए हाँ, ये जी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, बैंक निफ्टी हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग दी है और BTS की कैरी कराई है। तो बैंक निफ्टी में उसी मतलब इस स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ स्टार्ट करूंगा। इंडेक्स में अच्छी क्लोजिंग आई है, निफ्टी में ठीक ठाक आई है, बैंक निफ्टी में अच्छी क्लोजिंग आई है और उसी के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बेहतरीन क्लोजिंग आई है। यहाँ से जो पुल बैक स्टार्ट हुआ है ये थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। तो स्मॉल कैप में यहाँ से 2 से 2.5% की हमको यहाँ से पुल बैक आती हुई दिख रही है, और अगर 2% की पुल बैक आती है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे समवेयर अराउंड 19,300 चल रहा है, तो यहाँ से 2 से 2.5% की अपमूव अगर इंडेक्स में आती है तो जो लीडिंग काउंटर्स हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, अल्फा जनरेट कर रहे हैं, वहां पे 12 से 15% की अपसाइड आ सकती है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको अगले 3-4 दिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन इसमें ब्रेकआउट्स जो प्ले करेंगे उसमें फटाफट एग्जिट भी करना होगा। 10-15% की अपनी प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि माहौल अभी बदला नहीं है। ये ब्रॉडर जो पुल बैक मतलब डाउन मूव आई थी उसमें पुल बैक है, एक बार नए लोज बनते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अगर आप चार्टिकली देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप अपनी लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 से 4 दिन ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो जाती है तो मार्केट में तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो मैं बहुत क्लोजली मिड कैप और स्मॉल कैप को वॉच कर रहा हूँ अगले 3 से 5 दिन। ये अगर होल्ड कर जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ को तो नई तेजी डेवलप कर देंगे। डेफिनेटली तो व्यू आ प्रमाणे અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે આપણને। બસ હોલ્ડ થવું જરૂરી છે। આજની આ જે તેજી છે તેને ખાસ ફોલોઅપ મૂવ કઈ રીતે આવે છે તે આપણે ખાસ સમજવું જરૂરી રહેશે। ડિફેન્સ સ્ટોક્સ કાफ़ी अच्छे चले सर आज।
BEML तो आपने पहले बात की ही सही, इसके अलावा मसगांव डॉक देख लीजिए, गार्डन रिच बिल्डर्स, आपने वैसे जेनरिक कमेंट्स दिए हुए हैं, सो मैं वहाँ पे ना जाते हुए नेक्स्ट स्टॉक सर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो है रेमंड सर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, 0.6% की तेज़ी देखी आज हमने, और वैसे तो रियल एस्टेट स्टॉक अब अलग हो चुका है, ऐसे ही मानिए आप, लेकिन फिर भी एक टेक्सटाइल फेस्टिव सीजन की डिमांड आई गेस, कैसे देखे सर रेमंड को? देखिए रेमंड्स लिमिटेड, आप रेमंड्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं राइट? जी सर। क्योंकि रेमंड लाइफस्टाइल दो अलग है। नहीं, रेमंड लिमिटेड सर। देखिए रेमंड लिमिटेड में एक एक्सटेंडेड डाउन मूव थी। आप देखिए नॉन स्टॉक ये स्टॉक करेक्ट हुआ है 4 सितंबर से जो फॉल आना स्टार्ट हुई है, 28% की गिरावट रही है ऑलमोस्ट 23 दिन में। तो वहां से 6 दिन का बॉक्स बना के ऊपर चलना स्टार्ट किया है, जिसका पुल बैक का पहला टारगेट 1830 रुपए होगा और दूसरा टारगेट अगर एक्सटेंड करता है तो 1960 रुपए आएगा। तो ब्रॉडर डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में करेक्शन है, इसको करेक्शन की तरह मान के अगर लॉन्ग कर भी रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंसेस पे निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये कोई पैटर्न बना रहा है कि अपसाइड ब्रेकआउट देके चल देगा। तो फिलहाल पुल बैक है, पुल बैक के बाद इसमें वापस से सेलिंग आती हुई दिखेगी। तो पुल बैक में अगर आपके पास है एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, और पुल बैक के लिए अगर लॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में प्ले कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट काउंटर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनको अगर प्ले करते हैं तो ज्यादा रिटर्न बन सकता है। ओके, तो व्यू आ प्रमाणे અહીંયાથી ખાસ બની રહ્યું છે।